Morning, 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 morning. Yes, good morning, good morning. Morning is always good. May make your day good, and every day good, right? Okay. कल बहुत दिनों बाद किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी 2012 वेंकट राजा। तो मैंने पूछा और कुशल मंगल, तो उसने बोला नहीं सर, क्रांति मंगल। मतलब क्रांति मंगल तो हाँ सर। कॉन्फ्लिक्ट ब्यूरोक्रेसी में एट टाइम्स राइट इज इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में अभी पॉलिटिकल थोड़ा कंपटीशन इज हाई, इनस्टेबिलिटीज आर देयर। तो इन अ ब्यूरोक्रेटिकली स्टेबल सोसाइटीज ऑल्सो दीज डेज, है ना, क्रांति मंगल इज देयर। आई मीन कुशल मंगल की जगह क्रांति मंगल। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स एट टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस क्या है, यूनाइट इंडिया कैंपेन, राइट? हम्म, यस, ओके। ठीक है, ठीक है। जब व्हेन यू से कि इंडिया इज अ कंट्री विथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी के साथ डिस्पैरिटीज आर आल्सो देयर, इजंट इट? यस और नो? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जहाँ भी होगा वहाँ some vested interest always will you know showcase and orchestrate diversity and disparity, है ना? कुछ लोग उसको यूनिटी का प्रयास करेंगे, कुछ, है ना? लेकिन ऐसा ओवरऑल ओवरऑल 10-15 डेज अगर टीवी देखना बंद कर दो तो लगेगा आपको, न्यूज़ देखना बंद कर दो तो लगेगा कि इंडिया में सब कुछ सही है ना? यस, ओके। मतलब इन रिस्पेक्ट टू दिस डिविजन्स, separations, isn't it? Yes, ना? Polarizations, right? पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं, अदरवाइज सोसाइटी में तो राइट इंटरडिपेंडेंसी इज देयर। और दरखेम ने तो बहुत बाद में कहा कि दरखेम का कितना एक लिमिटेशन क्या है, यूरोपियन मॉडल, दे आर क्रिटिसाइज्ड फॉर considering European, society as a model for sociological theoretical strands. Otherwise, when he talks about ki with a structural differentiation, specialization, interdependency, so that had been there in Indian society. Interdependency and solidarity, isn't it? जिस तरीके से स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर में एनोमी एंड फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, सो वैसे इंस्टांसेस इंडियन सोसाइटी में मिलते रहे। सो हाउ कैन दे से कि इंडियन सोसाइटी इज बैकवर्ड सोसाइटी और अनसिविलाइज सोसाइटी? नहीं, हमारा तो सोशल कल्चरल सिस्टम में मैकेनिज्म ऑफ इंटर डिपेंडेंसी, इजंट इट? यस, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वे division of labor evolved in European society, similarly in our society also, right? Today you will see like caste occupations have been substantiated and organized in modern way, isn't it? है ना, हबीब का सैलून, क्या, am I right? हबीब, Javed Habib, isn't it? Right? And now charges, that is a big business actually, billion business. Yes or no? जॉन टेलर्स, एक बार मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि पहले हमारे दादा जब आए थे दिल्ली में तो रोड के किनारे ही यूज टू स्टिच, एंड आज 100 करोड़ का बिजनेस है उसका, isn't it? Doing tailoring for last 5 generations, right? But now modernized, organized, isn't it? Right? So जैसे यूरोपियन सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन हुआ ऑक्यूपेशन का, फोर्थ डिवीजन ऑफ लेबर, एकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर डिक्लाइन, सिमिलरली इन आवर सोसाइटी ऑल्सो। आज सेम जमींदार हैज टू पे फॉर टेकिंग सर्विसेज ऑफ द बार्बर्स इन द लोकल स्मॉल टाउन्स और विलेज। अब वैसा नहीं है ना डोमिनेंस की, बस आप सर्विस दे दो और उसके बदले ईयरली पेमेंट ऑफ क्रॉप्स, रावी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। नहीं, अब चेंज हो गया, कैश उधर चलता।
ब्राह्मण्स जो राइट्स एंड रिचुअल्स परफॉर्म करने आते तो पहले से फिक्स होता 1100 मिनिमम, राइट? 5000 जजमान की कृपा हो तो 21,000 बनता है। यस और नो? कैश ट्रांजैक्शन इज देयर और नॉट? यस ना? यस। एक्सपीरियंस पर्सनल? ओके। यस, 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 राइट। लास्ट ईयर फादर साहब व्हेन ही पास्ड अवे, तो राइट्स एंड रिचुअल्स में जैसे लोग बताते वैसा करते हम, राइट? क्योंकि कुछ होते हैं ना सीनियर, तो उसमें मतलब आई रियलाइज्ड कि देयर इज नथिंग काइंड ऑफ काइंड पेमेंट नाउ, राइट? नथिंग काइंड ऑफ काइंड पेमेंट जो पहले था, काइंड पेमेंट, क्रॉप का पेमेंट एंड ऑल, एवरीथिंग इज कैश, इजंट इट? डेथ राइट्स एंड रिचुअल्स में भी, राइट? है ना? ओके, ओके। मंदिर या मस्जिद या किसी भी गुरुद्वारे जो चढ़ावा होता है वो भी, that is modernization, modern system of exchange, isn't it? Exchange, right? Blessings, interdependency had been there. Like, for example, there are studies in Western Europe, yeah, Western Europe, sorry, Europe nahi, UP, Western UP, right? That is now, but that looks like Europe. If you go to Meerut now, तो बोथ साइड ऑफ हाईवे, एनीबडी फ्रॉम मेरठ? मेरठ से है तो बोथ साइड ऑफ हाईवेज ऐसा लगता है कि यूरोप में ही आ गए। मिराज बिस्ट्रो, है ना? तो मैंने एक बार इंक्वायर किया कि कौन है इसके ओनर, तो चौधरी जीतन लाल, ये चौधरी साहब का जमीन था। चौधरी साहब नाउ मिराज बिस्ट्रो। ऐसा सुन के लगता है कि आप लंदन में हैं, राइट? लंदन सिटी में है। वैसे ही नाम समझने के लिए आपको गूगल करना होगा, ऐसा नाम रखा है लोगों ने, राइट? हाँ, अभी मैंने पूछा, एक जानने वाले हैं मेरे, ही इज डीलिंग इन पोल्ट्री बिजनेस, बिग बिजनेस ऑफ पोल्ट्री, ही इज एमएलए ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा। उनको केवल हरियाणवी आती, न हिंदी न इंग्लिश, एंड ऑलवेज ऑन फॉरेन टूर फॉर हिज बिजनेस, लाइक एक्सपेंशंस। तो नाम मैंने पूछा कि ये नाम कैसे रखा आपने, कार्टेगना समथिंग? तो कुछ नहीं, वो मैंने गूगल किया कि मेरे गांव का सिनोनिमस नाम क्या हो सकता है, तो विलेज नाम का सिनोनिमस अफ्रीकन नेम रख दिया उन्होंने। अब ऐसा सुनने में लगता है कि क्या ब्रांड है, कोई फॉरेन ब्रांड है, कार्टेगना, राइट? ग्लोबल ब्रांड, स्काईलार्क, और ये सब हरियाणा का ब्रांड है, राइट? राइट, स्काईलार्क पोल्ट्री एंड ऑल, राइट? सो दिस इज, आई मीन दिस इज modernization over the period of time. Earlier, like, Jats were dependent on Brahmins for blessings for good crop, and they were paid in kind, isn't it? Interdependency, studies है मैं श्रीनिवास साहब का कि Jats and Brahmins का interdependency, right? Solidarity in relation, ठीक है ना? Refuting, British world view, European world view, right? इस बार क्वेश्चन भी आ गया, मैंने डिस्कस भी किया था, तब भी कई स्टूडेंट्स को याद नहीं आया सर। आंध्र बेटे का हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक रिलेशन, अरे तो जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ रिलेशनशिप में डिसहार्मनी भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा यूरोपियंस ने कहा कि कास्ट इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। उनका फोकस किस बात पे था? कास्ट इज हायरार्किकल इनइक्वालिटी, देयर इज डिस्टेंस, देयर इज सेपरेशन, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉयटेशन। ऐसा नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी, हार्मनी इज ऑल्सो देयर, राइट? जाट्स एंड ब्राह्मण्स के बीच में हार्मनी, राइट? गेटिंग योर पॉइंट? वही आंध्र बेते साहब का स्टडी है कि देयर हैज बीन हार्मोनिक रिलेशन एज वेल एज डिसहार्मोनिक रिलेशन। तो डिसहार्मनी कहाँ नहीं होता? कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट में नहीं होता क्या डिसहार्मनी? यूरोप में नहीं होता क्या डिसहार्मनी? इजंट इट? अमेरिका में नहीं हुआ? दोज अमेरिकन्स नाउ क्लेम टू बी सिविलाइज्ड, ब्लैक्स एंड वाइट्स फॉर सेंचुरीज, राइट? एक्सप्लॉइटेड ब्लैक्स, स्लेवरी सिस्टम एंड ऑल, राइट? तो दैट इज इंडियन सोसाइटी में ये सब हमारा बिल्ट इन सिस्टम है, इजंट इट? हार्मनी भी है एंड एट टाइम्स डिसहार्मनी भी है, बिल्ट इन सिस्टम, राइट? ओके, अभी जैसे पहले काइंड में जाट्स यूज टू पे टू ब्राह्मण्स, अभी कैश में पेमेंट करते, राइट? लेकिन आज भी ब्लेसिंग्स आर सॉट। अभी एडवर्टीजमेंट निकला जयपुर में, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिस्ट्स, उसमें क्राइटेरियन जो था वो ब्राह्मण्स, पहला क्राइटेरियन क्या था? ब्राह्मण्स, उसके बाद फिर ये, तो इसका एजेंसीज है नाउ, पीआर एजेंसीज हायरिंग,
because people are still, believing in culture, seek blessings, isn't it? Right. So this is, be that आज हिंदुइज्म में, इस्लाम में जो मौलवी होते, they are all educated, isn't it? Learned. Getting a point or not? Right. तो ऐसा नहीं है कि इस्लामिक ट्रेडिशंस और हिंदू ट्रेडिशंस हैड बीन बैकवर्ड एंड ऑल, नो, वो तो लेबलिंग हो गया, बिकॉज colonial rulers wanted to label the subjects as underdeveloped and backward, isn't it? Yes, Western lens. They looked at Indian reality from Western lens, isn't it? जिसको गांधी के लेंस ने फेल कर दिया, मैंने गांधी ने नया लेंस दे दिया, राइट? यस, गांधीयन लेंस. ओके ओके, कमिंग बैक टू yesterday we completed pattern variables, right? अब थोड़ा सिग्निफिकेंस समझ लो इसका. देखो, इसको एक्सेप्ट कर लेना कि यस, अब जरूरी नहीं है कि यू इंडिविजुअली फील ऑल टाइप्स ऑफ डिलेमाज, है ना? ये मान लो कि ऐसा डिलेमा आता है थ्रू आउट द लाइफ, पार्सन याद आता रहेगा आपको जब सिचुएशन ऐसा आएगा कि यस, डिलेमा इधर टू बीइंग पार्टिकुलरिस्टिक और यूनिवर्सलिस्टिक. मैरिज में आपका नॉर्म क्या होता है? पार्टिकुलरिस्टिक और यूनिवर्सलिस्टिक. पार्टिकुलरिस्टिक और यूनिवर्सलिस्टिक. पार्टिकुलर, जब आप एंडोगेमस मैरिज प्रेफर करते हैं, मैरिज विद इन कास्ट, तो आप क्या होते हैं? पार्टिकुलरिस्टिक. तो ऐसा डिलेमा आता है ना, एट टाइम्स यू बिकम डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, राइट? जब यूनिवर्सिटी डेज में होते हैं, इगलिटेरियन की नहीं, नो डॉरी, मैरिज एज पर इंडिविजुअल चॉइस, दिस इज माई लाइफ, माई चॉइस, काइंड ऑफ, माई रूल्स, राइट? राइट. लेकिन आफ्टर सम टाइम्स यू कन्फर्म टू, यू फेस डिलेमा. जब फैमिली में जाते, किनशिप जाते, उधर सभी बैठ के समझाते आपको, बुआ जी, फूफा जी, ताऊ जी, तो फिर यू, क्योंकि फाइन, ठीक है ना? लेकिन हाँ, ठीक है, एंडोगेमस आपकी मर्जी से, लेकिन व्हाइट हाउस में मैरिज करूंगा. व्हाइट हाउस क्लब है ना, मैरिज क्लब उधर है हरियाणा पंजाब रोड पे, व्हाइट हाउस मैरिज रिजॉर्ट, वहाँ मैरिज होगा. तो ठीक है, मान लेता है फैमिली की, फाइन, एंडोगेमस तो करे, अपना इज्जत प्रतिष्ठा रखे, बाकी तो व्हाइट हाउस में करे या प्रेसिडेंट हाउस में, वी आर रेडी, राइट? सो दिस इज dilemmas appears, being particularistic or universalistic, favoring to caste or being caste neutral, favoring to ethnicity or being ethnic neutral, isn't it? आप देखोगे, लबासना जाओगे, वहीं पे ग्रुप बन जाएगा, all Tamil brothers, right? All Marathi brothers in one frame, है ना? This is, particularism. This is particularism, right? कास्ट के लाइन पे ग्रुप्स बन जाते हैं, ऐसा बताते हैं स्टूडेंट्स, इजंट इट? मेरी लर्निंग लबासना के स्टूडेंट्स ही होती कि ग्रुप्स बन जाते हैं वहाँ पे, राइट? गेट यू? तो दिस इज पार्टिकुलरिज्म, इजंट इट? बट यस, ब्यूरोक्रेसी में यूनिवर्सलिज्म, यू इम्प्लीमेंट यूनिवर्सलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड लॉज, यस और नो, राइट? वुमेन पावर, वन फ्रेम, ऊपर लिखा होगा वुमेन पावर, लबासना, पार्टिकुलरिस्टिक. Getting a fine, gender based, right? Affiliations, right? So this is. ठीक है. Now, after this pattern variable, एक पैराग्राफ, कंजक्शनल पैराग्राफ लिखो कि दिस पैटर्न वेरिएबल, देखो इससे समझ लो, इससे होता क्या है कि दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यस और नो? देखो, ये फंडा, ये आइडिया ले लो, अभी एकदम इंटरनलाइज कर लो कि while describing any social structure, any society, be that in general studies or be that in sociology, you can use this frame to characterize the society, to characterize the structure, institution and values, either pattern A or pattern B or mix of both. Mix भी हो सकता है, mix of both, ऐसा rigid नहीं होना है, mix of both हो सकता है. जैसे अमेरिकन सोसाइटी, तो यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न उसमें है, यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, इजंट इट? जो कि पूरे वर्ल्ड से लोगों को वेलकम करता है, यस ना? एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे वेलकम यू? ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट और बीइंग इंजीनियर, बीइंग डॉक्टर, बीइंग इंजीनियर एंड डॉक्टर, यस और नो? राइट? योर अचीवमेंट. सो उसको, उस सोसाइटी को हम कैरेक्टराइज करते हैं कैसा? यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न वाला सोसाइटी है वो,
यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न। गेटिंग अ पॉइंट? तो इसी तरीके से वी कैन कैरेक्टराइज डिफरेंट सोसाइटीज। इंडियन सोसाइटी को भी कभी अपन डिस्क्राइब कर रहे हो तो विथ यूज ऑफ दिस पैटर्न वेरिएबल्स वी विल कैरेक्टराइज द सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी। राइट, देखो एक क्वेश्चन आ जाएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो वाई सिंह साहब ने तो जो कहा है कि ट्रेडिशन के 4 फीचर्स है एंड इन कोर्स ऑफ टाइम structures to modernize, new structures, modern structures were introduced by Britishers through the process of westernization, change took place in Indian society, but along with that tradition also got modernized। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। उन्होंने बताया कि कास्ट कैसे मॉडर्नाइज हो गया, है ना, कास्ट का जो नोशन ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन था वो डिक्लाइन हो गया एंड कास्ट गॉट मॉडर्नाइज्ड इन फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट? तो ये सब तो आप लिखोगे ही, बट इफ लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें ये इनसाइट्स भी आप लेकर आ जाओगे कि इंडियन सोसाइटी में these patterns are visible which is reflective of modernization of Indian society। तो वैल्यू एडिशन हो गया, पेपर 1 का पॉइंट अपन ने पेपर 2 में लिख दिया, isn't it? So this is, प्लीज एक कंजंक्शनल पैराग्राफ लिखो। According to Parsons, according to Parsons, pattern variables in any society not only define the nature of social interaction and role expectations, not only define nature of social interaction and role expectations, it also provides overall feature and characteristics. It also defines, defines overall feature and characteristics of the society, under bracket, whether the society is features or characteristics of society, features or characteristics of the society, under bracket, whether the society is traditional or modern, whether the society is traditional or modern, bracket closed, traditional or modern, bracket closed. It also provides overall direction. It also provides overall direction to its members to choose the role and behave in a particular manner. Choose the role or behave in a particular manner. Right, full stop. एक पैराग्राफ है स्मॉल। द पैटर्न वेरिएबल्स ऑफ टीपी, टालकट पार्सन, हाँ इसी में, द पैटर्न वेरिएबल ऑफ टालकट पार्सन illustrate principal types of social systems. Talcott Parsons illustrates principal types of social system. Principal types of social systems, right? On the basis of pattern variables. On the basis of pattern variables. For example, universalistic achievement pattern of, for example, universalistic achievement pattern of American society. Universalistic achievement pattern of American society. Comma, universalistic, particularistic, better say universalistic ascriptive pattern of नाजी जर्मनी, NAZI, नाजी जर्मनी, जो हिटलर के समय जर्मन सोसाइटी था वो कैसा था? यूनिवर्सलिस्टिक अस्क्रिप्टिव था,
हिटलर डिस्क्रिमिनेट करता था, वो सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करता था, Jews and Germans. Germans ascribed as pure race, isn't it? Right? So that is. हाँ, यूनिवर्सलिस्टिक बिकॉज अरे साइंस टेक्नोलॉजी, क्या जर्मनी पीछे था किसी से साइंस टेक्नोलॉजी में? अरे तो इसीलिए तो अस्क्रिप्शन लिखा ना आपने, यूनिवर्सलिस्टिक अस्क्रिप्शन, यूनिवर्सलिस्टिक अस्क्रिप्शन लिखा ना। यूनिवर्सलिस्टिक यहाँ मतलब ये है कि दे ऑल्सो बिलीव्ड इन मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, डिस्कवरीज, नेशन, ये सब मॉडर्न नोशंस है ना, राइट? राइट टू देयर सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स का राइट, अपने सिटीजन्स के लिए, इज इट इट? लेकिन उसके साथ क्या थे वो? अस्क्रिप्टिव, दे एम्फेसाइज्ड ऑन अस्क्रिप्टिव क्वालिटीज, कि जर्मन्स आर सुपीरियर देन नाजीज, sorry, Jews, isn't it? Germans are superior race, Jews are inferior race. That is context में, right? Particularistic, next, particularistic achievement pattern, particularistic achievement pattern of Chinese society. Particularistic achievement pattern visible in Chinese society. Comma, particularistic ascription pattern visible in Spanish Americans of USA. Particularistic ascription pattern visible in Spanish Americans of USA. Spanish Americans of USA. ये पार्सन ने बताया, वो कहा कि इसी तरीके से डिफरेंट सोसाइटीज कैन बी टाइपिफाइड और कैरेक्टराइज। यहां पे वो एडमेंट नहीं है कि यही होगा, ही जस्ट शो वन वे टू द रिसर्चर्स कि इन दिस वे यू कैन यूज पैटर्न वेरिएबल्स टू कैरेक्टराइज द पर्टिकुलर सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को अपन कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या है, हमारे सोसाइटी में तो कुछ ज्यादा ही वेरिएबल है। यूनिवर्सलिज्म इज देयर, कॉन्स्टिट्यूशन, universalism, constitutional laws, but at the same time particularism is there, regional political parties ka dominance, isn't it? Success in, right, achievement pattern is there as well as ascription is there, hai na? Yes or no? In interaction you will find a specificity as well as diffusion. A specificity versus, देखो एक जो जैसे harassment of women at work places जो cases आते हैं, वहां पे इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? लीगल, रैशनल, स्पेसिफिक इंटरेक्शन, बट एट टाइम्स वी सी, राइट, डिफ्यूज्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मेल एम्प्लॉइज, इजंट इट? इन्फ्लुएंस्ड बाय पैट्रियार्की, पैट्रियार्कल अथॉरिटी, मेल डोमिनेंस, इजंट इट? सो दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स, इजंट इट? तो इस तरीके से अपन जो जैसे पेपर 2 में है डोमेस्टिक वायलेंस, violence against women, isn't it? तो उसमें क्या होता है कि this diffused pattern of interaction at times causes violence, isn't it? That should be what? A specific and limited rule based in office, isn't it? And because of that at times forced to drop out from work organization, right? So this is okay. बस next line, next paragraph. अब although this is not in the syllabus, लेकिन पहले सिलेबस में था तो बात कर लेते हैं, है ना? हेडिंग दो AGIL, 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 राइट? पार्सन के सोशल सिस्टम में डिस्कशन आता है AGIL का, ठीक है ना? अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, ये 4 टर्म्स आते हैं। इसको अभी समझ जाएंगे आप। पहले सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन था, 4 टॉपिक्स वर देयर अर्लियर, अभी क्या 2 ही टॉपिक है मेरे, हैं? दैट इज पैटर्न वेरिएबल एंड, तो उतना अपन डिस्कस कर लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं। दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी आता है पार्सन में इससे, तो AGIL यू विल यूज इन एनालाइजिंग GS टाइप टॉपिक्स इन पेपर 2, है ना? GS टाइप टॉपिक्स जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स। अब प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स आ गया, वो हालांकि डायरेक्ट सिलेबस में भी नहीं है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स, लेकिन अगर आ गया, पहले क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एरियाज, सोशल इश्यूज बेस्ड क्वेश्चन को सोशियोलॉजिकल बनाने में यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट AGIL,
GS टाइप क्वेश्चंस को सोशियोलॉजिकल बनाने में यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट. लास्ट मैन गेटिंग माई पॉइंट, राइट? एक पैराग्राफ लिखो इंट्रोडक्टरी. अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, according to Parsons, social system has self maintaining and self adjustive, self maintaining and self adjustive mechanism, self maintaining and self adjustive mechanism. Order and stability, next sentence, order and stability in society, order and stability in society is maintained because of such mechanism in mechanism of social system, mechanism of social system. These adjustments and maintenance process, these adjustment and maintenance process of social system have been analyzed by Talcott Parsons, and adjustment and maintenance process in social system have been analyzed by Talcott Parsons in terms of functional prerequisites, functional prerequisites, prerequisites, functional prerequisites as functional prerequisites, right? Dash AGIL, dash AGIL, right? Full stop. According to Parsons, next paragraph. According to Parsons, there are certain functions. फंक्शनल प्रेक्विजिट को अंडरलाइन कर लो, इन्वर्टेड कॉमा में कर लो उसको. फंक्शनल प्रेक्विजिट, राइट? है ना? अकॉर्डिंग टू पार्सन्स देयर आर सर्टेन नीड्स. अकॉर्डिंग टू पार्सन्स देयर आर सर्टेन, बेटर से फंक्शन. अकॉर्डिंग टू पार्सन देयर आर सर्टेन फंक्शन that must be performed by different parts of the social system, different parts of the social system to fulfill the needs of society, to fulfill the functional needs of society or needs of society, to fulfill the needs of society. And this is because Parsons referred these as functional prerequisite. Under bracket लिख लेना. That's why these are referred as functional prerequisites. Right. There are 4 such functional prerequisites. Continue. There are 4 such functional prerequisites of social system identified by Talcott Parsons. 4 such functional prerequisites identified by Talcott Parsons. First, adaptation. Adaptation, right? Adaptation, सब heading देंगे आप. Adaptation, right? Full stop. Adaptation refers to acquisition, better say acquisition, comma, refers to acquisition, comma, generation and redistribution of resources
needed for survival of humans, acquisition, generation, and redistribution of resources, right? Needed for सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस। जरा यहाँ पे पॉज लो और कार्ल मार्क्स को याद करो। वो कहता है कि ह्यूमन फॉर सर्वाइवल एक्ट्स अपॉन नेचर। ह्यूमन अपने सर्वाइवल के लिए एंड देन दे डेवलप सोशल रिलेशन, है ना। तो सोशल रिलेशन आफ्टर प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय इनइक्वालिटी बिकॉज सम ह्यूमंस ओन एंड कंट्रोल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सम अदर ह्यूमंस work with the forces of production, and so inequality is there in society and inequality is exploitative and cause of conflict in society। यही बात बोला था ना उन्होंने, क्रक्स यही था ना मार्क्स का। फिर उसको हर स्टेज में बात किया उसने। इसी पॉइंट को पार्सन्स क्या कहता है कि नहीं, दिस इज द फंक्शनल प्रीरेक्विजिट, दिस इज द फंक्शनल इन एनी सोसाइटी फॉर सर्वाइवल इट इज इंपॉर्टेंट दैट some parts of society perform the function of what? Acquisition, generation, and redistribution of the resources, है ना। और पूरा इकोनॉमी काम क्या करता है? इकोनॉमी का यही फंक्शन है ना, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस, जनरेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इन द सोसाइटी, जिसको कार्ल मार्क्स कंसिडर्ड एज कॉजिंग इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। टालकट पार्सन ने क्या माना है उसको? फंक्शनल प्रीरेक्विजिट, फंक्शनल प्रीरेक्विजिट, राइट। और आगे एक सेंस आप डेवलप करोगे टालकट पार्सन से ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, इन द स्टडीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कि पार्सन कहता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन सोशल सिस्टम इन सोसाइटी एज पर देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल गेट इनटू डिफरेंट पोजीशंस, different positions as per their skill. Some persons get their role in planning, some persons get their role in production, some persons get their role in distribution, some other person gets their role in manual labor, and these are all, they are all interdependent on each other, related to each other. So there is no point of conflict and exploitation in society। ऐसा नहीं है कि conflict है, exploitation है, ये तो एक system है। This is one system, hierarchical, you know, arrangement on the basis of specialization। अभी स्ट्रेटिफिकेशन में अपन डिस्कस करेंगे इस बात को। तो ये दोनों पॉइंट मिलाकर किसका क्रिटिसिज्म हो रहा है? कार्ल मार्क्स का, है ना, राइट। जरूरी नहीं है एग्जाम में लिखें, अगर याद आ जाएगा तो अपन एक पॉइंट लिख देंगे, टालकट पार्सन्स। और कुछ नहीं तो बस इतना तो लिख ही सकते हैं, फंक्शनलिस्ट का जो क्रिटिसिज्म हमने किया था, कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म किया था ना फंक्शनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, that is basically would be substantiated with one more sentence, you know, टालकट पार्सन्स। एक सेंटेंस उसमें केवल बोरो कर लेंगे कि ये फंक्शनल प्रीरेक्विजिट है। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन दैट कार्ल मार्क्स प्रेडिक्टेड टू एंड इन कैपिटलिस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी आफ्टर प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन। क्यों रिवॉल्यूशन होगा? ये तो स्ट्रक्चर का प्रीरेक्विजिट है। दिस इज वन प्रीरेक्विजिट, फंक्शनल प्रीरेक्विजिट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिवॉल्यूशन। एंड सही भी है, पार्सन सही भी है, कहाँ रिवॉल्यूशन हुआ, राइट, कहाँ चेंज हुआ उस तरीके से, है ना। सो दिस इज नेक्स्ट लाइन, दिस फंक्शन और सच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम, सच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम। यस, मतलब कि पार्सन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, यू नो, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, आपको बोला था ना कि देयर आर मेनी सेकेंडरी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, राइट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। सो डोंट यू थिंक कि ऑल दीज इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्री, सर्विसेज, राइट, all perform the function of what? Acquisition, generation and redistribution of resources, and these functions help us to survive। ये इकोनॉमिक सिस्टम अगर माइनस हो जाए सोसाइटी से तो क्या थ्रेटन होगा? हमारा सर्वाइवल। यस और नो? राइट। सो दिस इज वन फंक्शनल प्रीरेक्विजिट ऑन विच ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी डिपेंड्स। अब देखते हो ना, थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ कि प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो टू डील विथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, राइट, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर अनाउंस किया ना कि 3 मंथ्स का एक्सटेंशन, पीएम
गरीब कल्याण योजना, क्योंकि कंपल्सन है। भले पिछले महीने उन्होंने पता नहीं कैसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, बोले कि ये फ्री बीज से, और आप लोगों को पता नहीं कितना एडिटोरियल पढ़ा। हाँ, मतलब ये थोड़ा डिसफंक्शन हो जाता है कि कई बार, इसीलिए एडिटोरियल वगैरह को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब आपने तो 5, 6, 7, 8 एडिटोरियल पढ़ गए होंगे फ्री बीज पे, दोस्तों के साथ पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर दिया, और गवर्नमेंट ने अभी फिर से फ्री बीज को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि वो फ्री बीज नहीं है। दैट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच, दैट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जहां इकोनॉमिक सिस्टम इज फेलिंग, सो वहां पे इंटरवेंशनिस्ट मेजर्स आर टेकन टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, इजंट इट? यस और नो? सो दिस इज ओके। बस इतना ही इसमें। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, all help to what? All performs the function of acquisition, generation and distribution of resources in the society for survival of humans. And thus, order and stability in society is maintained. And thus, order and stability in society is maintained, right? Next is goal attainment. Goal attainment. Goal attainment, right? Goal attainment as functional prerequisite refers to setting the goals under bracket of development, setting the goals under bracket development for attainment by mobilizing the people. Goal attainment as functional prerequisite refers to setting the goal. गोल कैसा गोल? अंडर ब्रैकेट, समझने के लिए, याद रखने के लिए, डेवलपमेंटल गोल्स अंडरस्टूड है, गोल्स फॉर राइट। उसके आगे क्या लिखा? फॉर अटेनमेंट बाय mobilization of people and their motivations, mobilization of people and their motivations, right? Yes na? Yes. This means एक और सेंटेंस लिख लो, this is the function of political system, this is the function of पॉलिटिकल सिस्टम, फुल स्टॉप। देखो सिंपल, पॉलिटिकल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? फंक्शनल। इट इज इंपॉर्टेंट दैट पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म दिस फंक्शन द वे आई सेड कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज मैंडेटरी दैट इकोनॉमिक सिस्टम इन सोसाइटी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्विजिशन, generation and redistribution of resources. Similarly, it is mandatory, it is essential that the political system set the goals, mobilize the people and their motivations for attainment of those goals. अगर political system ये करने में fail हो जाता है तो problem in society, तो problem in society, है ना? अब देखो कैसे ये help करता है समझने में। किसी in Indian society constitutional goals were set up, yes or no? Very preamble, set the goals, yes. Then DPSPs, isn't it? Directives to the state, isn't it? Then planning commission was set up, finance commission was set up, yes or no? Finance commission, planning commission, right? Every 5 years में planning commission set the goals of development on behalf of government, yes or no? Those plans year wise put in budgets, those targets and allocation of resources, funds, isn't it, to economic system for attainment of the goals. Agriculture के लिए fund, industrialization के लिए, isn't it? But in Indian society, जब अपन analyze करते हैं Indian society को, problem in terms of goal attainment, तो since during British period in Indian society, the interventions for development, I mean setting the goals of development, mobilizing motivations of the people and the people was very selective, जिसको कहते हैं selective developmental interventions during British period.
कि ब्रिटिशर्स selectively intervened in coastal regions, selectively developed Delhi Lutyens, isn't it? Delhi, isn't it? Some regions for their own, selectively railways and all. Post independence, despite constitutional mandates, by default, the government interventions remained selective. Remained selective. Interventions for agricultural transformation through implementation of न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, जिसको कहते हैं एनएएस, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, राइट? दैट न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी वाज इंप्लीमेंटेड इन सेलेक्ट रीजन्स बिकॉज ऑफ मेनी कॉन्स्टेंट्स, सेलेक्ट रीजन्स, इजंट इट? देन हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सेलेक्ट रीजन्स. इट वाज बिलीव्ड दैट कि बेनिफिट्स विल ट्रिकल डाउन. बेनिफिट्स क्या होगा? ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा. महलनोवी साहब ने, नेहरू साहब ने ये ऐसा माना उन्होंने. बट इन अ रिजिड एंड क्लोज सोसाइटी, benefits could not trickle down, were cornered. जैसे सत्यदेव का स्टडी है, in हरियाणा पंजाब region, most of the benefits of cooperatives were taken away by the land owning castes. जैसे cooperative, जैसे मिल्क cooperative था, तो मिल्क cooperative केवल लैंड ओनिंग कास्ट के नहीं था. इंटरमीडिएरी ग्रुप्स, दोज हु आर स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस, उनके लिए क्या आया? मिल्क कॉपरेटिव्स. लेकिन मिल्क कॉपरेटिव्स आल्सो बिग फार्मर्स. मोस्टली बिग फार्मर्स आर डेयरी ओनर्स. यस ना? कौन सा ब्रांड है हरियाणा में मिल्क का? ब्रांड्स नहीं नहीं, लोकल ब्रांड्स आर आल्सो देयर, राइट? है ना? बीटा, कई, मतलब इन डिफरेंट रीजन्स, मोस्टली द बिग फार्मर्स कॉर्नर द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव्स व्हिच वर मींट फॉर इंटरमीडिएरी ग्रुप्स, है ना? इंटरमीडिएरी ग्रुप्स अर्लियर ट्रेडिशनली आल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल हस्बेंड्री फॉर सप्लीमेंट्री इनकम. सप्लीमेंट्री इनकम, जहां गुजरात में डेयरी कोऑपरेटिव्स, अमूल का कोऑपरेटिव आर सक्सेसफुल, वहां पे इंटरमीडिएरी एंड स्मॉल फार्मर्स आल्सो डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट नॉट इन अदर रीजन्स. नॉट इन अदर रीजन्स, राइट? डोमिनेंट कास्ट फिनोमेना एक स्टडी करेंगे. डोमिनेंट कास्ट्स बेसिकली कॉर्नर्ड द बेनिफिट्स, इजंट इट? पेपर 2 में एक कॉन्सेप्ट आएगा डोमिनेंट कास्ट का, है ना, कास्ट सिस्टम में. तो दिस इज गेटिंग योर पॉइंट. मतलब कि जो गोल्स वेर सेट, दोज गोल्स कुड नॉट बी अटेन्ड, राइट? गोल्स वेर सेट फॉर सेलेक्टिव डेवलपमेंट. बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं 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 नहीं, इन दिस सेलेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेनिफिट्स आर नॉट ट्रिकलिंग डाउन टू द लोकल ट्राइबल्स. ऑल्दो एचएएल वाज सेट अप इन द मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ द डे, उस समय का कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. बट टिल लेट 90s कोरापुट में रिपोर्ट्स आते रहे कि ट्राइबल्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रूट्स एंड ट्यूबर्स, राइट? मतलब बेनिफिट्स कुड नॉट ट्रिकल डाउन टू द लोकल. केबी के रीजन स्टिल वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन ऑफ इंडिया, यस और नो? यस ना? राइट? तो व्हाट आई मीन टू से कि सेलेक्टिव डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस, बेनिफिट्स कुड नॉट ट्रिकल डाउन टू ऑल. नॉट ऑल पीपल कुड बी मोबिलाइज्ड. नॉट ऑल people's motivation could be mobilized, and so development goals could not be attained. जो goals constitution ने set किया, those could not be attained, isn't it? बाद में governments ने changes किए, बाद में realize हुआ, तो government initiated tribal sub plan. tribals के लिए अलग से planning, tribal sub plan, yes or no? later on government realized, तो regional planning, rural development का planning 1970s onward, right? Government realized then autonomy given to states in matters of planning for agricultural development, right? आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते होंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना was meant for what? Was meant to empower the state, and as per that plan, states were given autonomy to make agricultural development plan as per their agroclimatic conditions of the district. पहले कैसा प्लान बनता था? सेंट्रल प्लानिंग. पहले प्लान सेंटर बनाता और उस प्लान के इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट को पैसा देता. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में चेंज कर दिया कि नहीं, स्टेट विल हैव ऑटोनॉमी टू मेक प्लान. एंड आफ्टर दैट मेनी अंडरडेवलप्ड स्टेट्स, यस, जैसे बिहार बिकेम नंबर 1 इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस by year 2010. earlier पंजाब, right? प्रोडक्टिविटी में. क्यों? क्योंकि उसको ऑटोनॉमी मिला एंड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग दे प्लान्ड डेवलपमेंट,
right? Many states, Uttar Pradesh, MP, Chhattisgarh, developed, agriculturally after that. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में स्पेशल प्रोविजनिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वुमेन फार्मर्स, और एक स्पेशल प्रोविजन मुझे अब याद आ रहा है, बहुत सारे प्रोविजन से, जिसमें ये था कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी टू ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू make small tractors which is more suitable for small and marginal farmers and women farmers. क्योंकि ट्रैक्टर्स कंपनीज बनाती नहीं थी, उनको मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार्टेड गिविंग सब्सिडीज. और आप अब रूरल एरियाज में जाएं तो आपको बहुत सारा स्मॉल ट्रैक्टर विजुअल होगा स्मॉल फार्मर्स के पास भी, राइट? वुमेन फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, हैंडी ट्रैक्टर्स, राइट? सो दिस इज, तो ये सब चेंजेज हुए किस लिए? फॉर अटेनमेंट ऑफ द goals, goal attainment. ये जो modifications हुए over the period of time, those modifications, those changes were meant for mobilizing the masses, mobilizing the masses, isn't it? Their motivations. क्योंकि ये important function किसका है? Political system का function है. और आप जो कभी-कभी criticize भी करते कि ये नेता बहुत भाषण देते, स्पीच देते, काम नहीं करते, नहीं. पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल लीडर्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मोबिलाइजिंग द पीपल एंड देयर मोटिवेशंस. मोटिवेशंस को मोबिलाइज करना, मोटिवेशंस को मोबिलाइज करना, सेटिंग द गोल, सेटिंग द न्यू टारगेट्स, मोबिलाइजिंग द मोटिवेशंस ऑफ द पीपल, मेकिंग पीपल मोर एनर्जेटिक टू टेक इनिशिएटिव्स, अटेम्प्ट्स एंड सो पॉलिसीज, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, isn't it? भले लिमिटेशंस हो सकते हैं सक्सेस में इसके, लेकिन these have been functional in mobilizing the motivations, isn't it? Right? Yes, yes. और इसीलिए जो पॉलिटिकल रैलीज होता है इसका फंक्शन है ना. देखो अमेरिका के अंदर कितना ज्यादा कॉस्ट, राइट, ऑफ पॉलिटिकल रैलीज, बिकॉज दैट इज अ बिग स्टेट एक्चुअली, नेशन स्टेट, isn't it? तो वहां पे इलेक्शन के खर्चे भी ज्यादा है, लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मोबिलाइजिंग मोटिवेशंस ऑफ द पीपल. देखो वहां कैसा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बना रखा है. In America, on the day of presidential debate, there is public holiday in schools, and standard 5 above children are given task homework to listen to the debate and write one essay to whom they like and why they like. So political socialization का system देखो कैसा institutional framework में है वहाँ पे. Presidential debates के दिन public holiday कि people listen to their प्रेसिडेंशियल स्पीच, और वो आपको पता ही है पब्लिक स्पीच होता है, राइट, ऑर्गेनाइज्ड, एंड चिल्ड्रंस हैव टू राइट एसे ऑन कि whom they like and why they like, what policy preferences they have, ये सब के ऊपर, isn't it? किस लिए? mobilizing their motivations. और अपने यहाँ मना करते कि नहीं सुनो बिगड़ जाओगे, तो बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिबेट होता है वो कई बार तो हाथापाई एंड यस ना, यस और नो. सो दिस इज किस लेवल का डिबेट हो जाता है. तो ये पॉलिटिकल सिस्टम के प्रॉब्लम्स में भी मानते हैं हम, पॉलिटिकल सिस्टम का, कि मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल शुड बी ऑन डेवलपमेंटल गोल्स, नॉट ऑन कास्ट लाइन, नॉट ऑन एथनिसिटी, नॉट ऑन पोलराइजेशन. लेकिन वैसा पॉलिटिकल कंपल्सन रहा है तो उस तरीके से आप देखोगे जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होगा वो बड़ा सब्सटेंसिव होता है, उसमें पॉलिसीज के ऊपर बात होंगी, isn't it? Getting your point? अब अमेरिका का पॉलिसी केवल डोमेस्टिक नहीं है, वो तो इंटरनेशनल, तो ज्यादा आप सुनोगे कि इंटरनेशनल, हमने इराक में ऐसा किया, हमने अफगानिस्तान में ऐसा किया, डील इन ग्लोबल पॉलिसीज एंड ऑल मोर दीज डेज, राइट? ओके, सो दिस इज गॉट दिस पॉइंट, ये समझ गए ना? सो यू विल यूज दिस गोल अटेनमेंट. मान लो कि अगर लिख रहे हो पेपर 2 में डेवलपमेंटल प्लानिंग आपका एक टॉपिक है ना, तो उसके प्रॉब्लम में यू विल मेंशन देयर हैव बीन प्रॉब्लम इन सेटिंग द गोल्स रैशनली, setting the goals rationally. At times, particularly in the beginning, goals were set romantically, right? Than rationally, emotionally than rationally, right? And जब rational goal setting होता है, that is attained. Getting your point? Legal rational goal setting होगा तो that is attained, isn't it? Right? So, जिस बात को आप GS में कहते हैं कि there has been gap between the resources and the targets, है ना? Targets high, resources low, तो उसी को sociological language में क्या बोलेंगे?
there had been problem in goal attainment, isn't it? Getting your point? Yes, na? Goals were set emotionally, isn't it? Not legally, rationally, isn't it? Right. So this is okay. बाकी गोल सेटिंग में जो प्रॉब्लम्स रहे हैं रीजनलिज्म का, अपना सिलेबस में टॉपिक है आपका, है ना? रीजनलिज्म एंड ऑल, इजंट इट? राइट. इंटीग्रेशनल फैक्टर्स का प्रॉब्लम, राइट? ओके, नेक्स्ट इज integration. Integration. Yes, please note integration as functional prerequisite. Integration as functional prerequisite helps in maintaining solidarity. Helps in maintaining solidarity, unity, coordination, and coherence in the social system. Coherence in the social system. Coherence in the social system or in society. It prevents, or such function, better say, such function or function of integration prevents the society from breakdowns, prevent the society from breakdowns and disruptions. Right. Education system, value system perform, value and cultural system, better say, value and cultural system perform the function of integration. The function of integration. आज जो like people belonging to different castes, different ethnicities, different, right, regions have been integrated into mainstream society कैसे? Through education, yes or no? Constitutional values, yes or no? Yes, na? Modern cult religion has also played important role. Modern cult religions promoting humanism, humanity, yes or no? आज का religion supernatural promote करता है या humanism promote करता है? Sadhguru foundations, I mean Isha Foundation and many such foundations, like oriented towards dealing with the people's day-to-day problem, human problems, yes or no? Day-to-day life ka problem, right? Marriage ka issues, family ka issues, yes or no? Career issues, right? Yes or no? So humanistic religions all play important role in integration. Integration is also important, function. Integration is also important function, right? If people in such meritocratic society, modern meritocratic society are well educated, don't you think कि education से they are integrated into mainstream society? आज जो excluded sections रहे हैं हमारे society में भी, या American society blacks, blacks, racial groups, right, African Asians, African Americans, isn't it? Latino Americans, right? Yeah, in Indian society, many groups, women, tribals, Dalits, isn't it? All integrated into mainstream society कैसे? Integrated into mainstream society through constitutional values, education, rural population in general, right? Excluded from modern institution, modernity, now been well integrated into modern systems, isn't it? Through कैसे? How? Education. Education. So this is important functional prerequisite for maintaining order and stability in society. और इसलिए आप देखते हैं कि हमारे सरकार का भी and world over developing societies में high focus on education because that is the means for integration, order and stability in society, right? So this is. Next is, fourth is latency, L-A-T-E, sorry, latency, T-E-N-C-Y, or
pattern maintenance or pattern maintenance, latency or pattern maintenance. This pattern variable, not pattern variable, this functional prerequisite helps in maintaining the pattern by managing the tensions, conflicts, helps in maintaining the pattern by managing individuals, tension, right, conflicts, and by motivating and stabilizing the personalities of members of society, right, members of society. This functional prerequisite helps in maintaining the pattern by managing tensions, individual tensions, conflicts, by motivating and stabilizing individual personality, isn't it, in the society, individual personality of the members of society. This function is performed by socialization process. ये function कौन perform करता है? Socialization process, right, in different institutions. Socialization process by different institution. Socialization केवल family में नहीं होता, यहाँ भी you are socialized, yes or no? In training process also you will be socialized, yes or no? लबासना में भी आपका क्या होगा? Socialization होगा, isn't it, right? So please इसको समझ लो. This function is performed by socialization process in different institution. जैसे family socialization, आपका personality adjustment, इधर भी आपका क्या? Personality development. लबासना में भी personality development. Pattern of development is maintained, isn't it? इसका function क्या होता है? Maintenance of pattern. Don't you think कि in your socialization, early socialization process, you have learned about the values, you learned about the institutions, you learned about the religion, culture, food, dress, lifestyle, etc. ये सब कहाँ से learn करते हैं आप? Socialization process में ना, right? Socialization process में कि कैसा ड्रेस पहनना है, कैसा लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज. हाउ डू यू लर्न मराठी एंड हिंदी इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज और अर्ली सोशलाइजेशन प्रोसेस? अर्ली सोशलाइजेशन प्रोसेस, isn't it? So this process, play important role in maintaining the pattern, maintaining the pattern. अच्छा, ये जो integration है and pattern maintenance, these functions are performed by same institutions, है ना? ये दोनों functions similar institution perform करते हैं. Family also play important role in integration. आज आपको family finance कर रहा है ना, right? And family play important role in pattern maintenance by socialization. Socialization in values, religious norms, cultural values, marital values, etc., etc. Yes or no? Yes, na? Maintaining the pattern of society. Pattern of society. And this is also important. हाँ. हाँ, वो नहीं, वो इंटीग्रेशन नहीं होता, नहीं. बायसेस एंड प्रेजुडिसेस आप सीखते नहीं हैं, है ना? नहीं, दैट इज रिलेटिव टू पर्टिकुलर सोसाइटी. अब आप कहेंगे कि भाई पैट्रियार्कल बायसेस एंड प्रेजुडिसेस, तो वो तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ना, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी. टालकर पार्सन कहता है कि इन मॉडर्न सोसाइटी में ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव स्पेशल फंक्शंस. तो चेंज भी तो होता है ना. ऐसा थोड़े ना है कि आज कास्ट आपको प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन सिखाता है क्या? नहीं. कास्ट आपको मोटिवेट करता है कि बिकम आईएएस, आई विल फाइनेंस. देयर आर कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग टू देयर मेंबर्स फॉर बिकमिंग आईएएस. गेटिंग योर पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि जो हाँ एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हमेशा रियलिटी को किस में समझेंगे?
पर्टिकुलर सोसाइटल टाइप में। अब किसी समय में तो पैट्रियार्की वाज फंक्शनल फॉर मेंटेनिंग अथॉरिटी सिस्टम। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तभी तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज इंपॉर्टेंट ना, तो कास्ट यूज टू टेक डिसीजंस एंड मेंटेन पैटर्न। तो उस कॉन्टेक्स्ट में है ना, हालांकि क्रिटिसिज्म इसका होगा आर के मर्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केवल फंक्शन नहीं होता है, डिसफंक्शन होता है, लेकिन वो लास्ट में। लेकिन पहले ये समझो, पहले अभी इसको रिजेक्ट नहीं करो, ये है या नहीं है। सोशलाइजेशन में यू हैव लर्न अबाउट ड्रेस और नॉट, है ना। किसी ने समझा है कि आज ट्यूसडे है तो रेड ड्रेस पहनना है, रेड ड्रेस। आपके सोशलाइजेशन में आपने नहीं समझा कि तो सोशलाइजेशन शेप्स द पैटर्न, यस और नो, है ना, कि ड्रेस कैसा, फूड कैसा, है ना, कल्चर हमारा कैसा, लाइफ स्टाइल कैसा, ये सब सोशलाइजेशन है ना। एंड सोशलाइजेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पैटर्न। यहाँ पैटर्न मेंटेनेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझो, राइट। अगर पैट्रियार्कल पैटर्न मेंटेन हो रहा है विच इज अ डिसफंक्शन इन मॉडर्न सोसाइटी, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन, जिसको आर के मार्टिन कहेगा कि सोशलाइजेशन इज नॉट ओनली फंक्शनल बट ऑल्सो, तो क्रिटिक में बात करेंगे उसका। लेकिन ये पॉइंट है कि नहीं कि सोशलाइजेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पैटर्न। आपको क्यों फर्स्ट फेज का ट्रेनिंग, सेकेंड फेज, फोर्थ फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, इतना फेजल ट्रेनिंग क्यों देता लबासना? सोशलाइजेशन फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग द पैटर्न। एवरी ईयर hundreds ऑफ bureaucrats are recommended back by the जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी हर स्टेट में होता है, और जीएडी लिख के देता है कि भाई ये ब्यूरोक्रेट इनएफिशिएंट हो रहा है, इसको रीट्रेनिंग चाहिए। तो वहां फिर भेज दिया जाता है कि जाओ मसूरी में बैठ के कुछ और दिन, राइट। तो सोशलाइजेशन किस लिए? सोशलाइजेशन के लिए, क्योंकि इट इज विजिबल कि दे आर नॉट मेंटेनिंग द पैटर्न, इजंट इट, इन ब्यूरोक्रेसी, है ना। वो इनएफिशिएंट हो रहे हैं, वो डेविएट हो रहे हैं हर साल ऐसे, मतलब स्ट्रेस, अच्छा ह्यूमन बींग्स है मैन, स्ट्रेस टेंशन तो होता ही है। तो कई ब्यूरोक्रेट वहां पे, है ना, वापस आते हैं, उनको स्पेशल कोर्सेज कराए जाते, है ना, राइट। एंड 24/7 लबासना में आप देखोगे कि आप जब ट्रेनिंग में जाओगे तो बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट की ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे क्लास लेंगे, आपको लगेगा कि ये क्लास लेने आए होंगे, पता चलेगा वो भी क्लास कर रहे हैं, राइट। यस यस, हाँ, कंटिन्यूटी में। इसीलिए तो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं अर्ली को, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, इजंट इट। और अब तो इंस्टीट्यूशन भी आ रहे हैं ना इसके लिए, ओल्ड एज होम्स आ रहे हैं टू टीच द ओल्ड एज पीपल टू स्ट्रेंथन देयर एडाप्टेशनल कैपेसिटी, कैसे एडाप्ट करें, इजंट इट, राइट। ओके ओके, सो दिस इज गॉट दिस पॉइंट। एजीआईएल का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है डायरेक्ट अब चूंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन indirectly you have to use these concepts in different scenario. Don't you think कि एक समझ लो एग्जांपल जैसे, don't you think post LPG forceful acquisition of land in many underdeveloped regions for setting up of multinational corporations, or forceful acquisition of land for setting up of multinational corporations in rural areas, right, has disrupted the pattern? Yes, na? Disruption in pattern. The tribals who were displaced from one region, forced to be displaced, like tribals displaced from Jharkhand to Odisha. Odisha का tribal displacement, चूंकि contiguous regions है, they reached to Andhra Pradesh and lost their identity. Their cultural pattern was disrupted because culture is greatly shaped by the geographical and climatic conditions. Yes or no? आप जिस लोकेलिटी को बिलोंग करते हो, चाहे हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, डोंट यू थिंक कि योर कल्चर, योर लैंग्वेज, योर एक्सेंट, योर कल्चर इज वेरी मच शेप्ड बाय दैट? सो दैट वाज डिसरप्टेड, इजंट इट? दैट वाज डिसरप्टेड। तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग द पैटर्न, राइट। फोर्स्ड माइग्रेशन एट टाइम्स, नेचुरल कैलामिटीज आ जा रहा है ना, पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। और यहाँ पे क्या सरप्राइज्ड, जो वहां नेचर के बीच में रहना है उसको, खेतों के बीच में वो खाट लगा के सो रहा है, यहाँ पे राइट 10x10 के रूम में 5 पर्सन फेज्ड मैनर में सोते, कि भाई मॉर्निंग में तुम, उसके बाद फिर हम काम से आएंगे, राइट। सबका अलग अलग टाइम होता, रिक्शा, ऑटो, इजंट इट? आफ्टर माइग्रेशन, फोर्स माइग्रेशन,
isn't it? जिसको कहते हैं हम स्ट्रेस माइग्रेशन, सोशियोलॉजिकली उसको बोलते हैं स्ट्रेस माइग्रेशन, isn't it? Because of rioting, because of caste conflict, because of natural disasters, people are forced to migrate from a particular locality to another localities, isn't it? Right. तो पैटर्न मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, और जिस सोसाइटी का कल्चरल पैटर्न इज नॉट मेंटेन्ड, तो सोशल, इकोनॉमिक, ऑल आर डिसरप्टेड, ऑल आर डिसरप्टेड, राइट? आज चाइना ने इतना डेवलपमेंट किया तो चाइनीज लैंग्वेज को मेंटेन करके किया, अपने कल्चर से कॉम्प्रोमाइज किया क्या? नहीं, राइट? सो दिस इज मेंटेनेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ कल्चर इज ऑल्सो important, functional prerequisite, language and all, right? So this is, got this point? Integrational, अपन कहते हैं कि इंडिया में आपका एक सिलेबस में टॉपिक है एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। टॉपिक क्या है? डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, राइट? लास्ट यूनिट का, पेपर 2 का। अरे अब तक मगअप हो जाना चाहिए सिलेबस, मैन। आई फील यू सरप्राइज्ड कई बार कि आपको जब सिलेबस पूछता हूँ, अब तक मगअप हो जाना चाहिए सिलेबस। कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, यू मस्ट मग इट अप, है ना? डिस्पैरिटीज है ना? लास्ट यूनिट क्या है? लिटरेसी एंड एजुकेशन, राइट? तो डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन अगर है इंडिया में, जो कि सिलेबस ही कहता है, तो डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन हैज कॉज्ड प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन। नॉट एवरीवन हैव बीन opportunity, to get access to modern occupation because of lack of education, isn't it? And not well integrated into mainstream society. Integrational challenges, और ये केवल इंडिया का बात नहीं है, मैन, वर्ल्ड ओवर, in American society too, in comparison to whites and blacks, there is huge disparity between white communities of America and blacks, isn't it? Americans, isn't it? And that's why, blacks are not fully integrated through institutional means, isn't it, in mainstream society? Getting a point? So this is, so these 4, functional prerequisites help us understand the issues and problems in society. Agar poverty hai, to poverty is there among some communities, and that we describe sociologically as adaptational challenge, isn't it? Yes or no? Problems in adaptation in agriculture, through agriculture, राइट? जैसे हमारा न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आया, न्यू, क्या बोलते हैं उसको, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, है ना? तो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो, ये मतलब सिलेबस आपको पढ़ने में अच्छा लगता है शायद, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा, ये जो बता रहा हूं ना, ये हेल्प करेगा आपको। पेपर 2 के कलरेशन में, पेपर 2 के कलरेशन में न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ उसका? इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, फूड सेल्फ सफिशिएंसी, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या हुआ उससे कि न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, and in course of consolidation of land, a small and marginal farmers lost their interest in agriculture. They lost their land in course of time to big farmers, right? So agricultural workers, lost their wage work to machines. तो इस केस में क्या हुआ? Their adaptational capacity was weakened, है ना? स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का एडेप्टेशनल कैपेसिटी वीकेंड, और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी गैप रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मेजर पॉलिसी आया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, दैट वाज राष्ट्रीय न्यू एग्रीकल्चरल नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, आई गेस इन ईयर 2007 और 6 में। न्यू क्या होता? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी भले इसका नाम है, लेकिन उसमें यह था कि फोकस ऑफ पॉलिसी शिफ्टेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इंपावर करने का। और आज भी गवर्नमेंट का फोकस उसी फार्मर ग्रुप पे है, स्मॉल एंड मार्जिनल पे। उसके बाद से मतलब मिलेनियम डिकेड ऑनवर्ड फोकस शिफ्टेड फ्रॉम बिग फार्मर्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बिग फार्मर्स का प्रोटेस्ट कुछ ज्यादा हो रहा है इंडिया में। उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल पार्टी नहीं बनते, क्योंकि दैट इज reality in Indian society. There is huge gap between big farmers and small and marginal farmers, isn't it? Right? So this is so adaptational challenges for small and marginal farmers. Yes na? Industry setup ho gaya in many regions, but displacement of the locals, right? The farmers, isn't it? Small and marginal farmers, their adaptational capacity weakened. उनका adaptational capacity क्या हुआ? Weakened हो गया। जो मुआवजा मिला कंज्यूम कर गए, और उसके बाद स्ट्रेस, टेंशन,
दोबारा से लेते हैं, अच्छा फिर उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओके, सो दिस इज तो ऐसे अप्लाई करोगे इसको, ठीक है। लास्टली एक और जो कि सिलेबस में नहीं है, बट इसको भी नोट कर लो, ब्रीफ है, चेंज के कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, चाहे इंडियन सोसाइटी में या पेपर वन में भी चेंज अगर लिख रहे हो, थियरीज ऑफ सोशल चेंज में, वहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। साइबरनेटिक, ओहो, साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल, साइबरनेटिक हायरार्की, मैकेनिकल इंजीनियर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पे पढ़ा जाता है, साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, साइबरनेटिक कुछ याद नहीं है कोई बात नहीं, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में दिस हैपेंस, यू नो मोर यू विल बी सोशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, मोर यू विल फॉरगेट योर इंजीनियरिंग का नॉलेज, यस ना, यस यस, सो नो प्रॉब्लम, अगर आप भूल रहे हैं तो भी अच्छा है, अनलर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीलर्निंग, यस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो साइबरनेटिक्स का जो साइंटिफिक जो लिटरल मीनिंग होता है, दैट इज कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, isn't it? This refers to communication and control systems. Parson, चूंकि as I said कि he is a modern sociologist, he kept on writing till 1990s. He belonged to the period of टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन अमेरिका, वही पीरियड था 1960s का 70s का, जब अमेरिका चांद पे चला गया, यस ना, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, सो हिज राइटिंग्स वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज रिवॉल्यूशंस इन साइंस टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंसेस में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट। सो ही बोरोड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर एंड अप्लाइड इन सोसाइटी, इन स्टडीज ऑफ सोसाइटी, राइट, एंड ही आर्ग्यूड कि देयर इज a strong communication and control system in society too, communication and control system in society too, right। एक ड्राइंग कर लो, ओहो, कल्चरल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम सबसे ऊपर क्या लिखोगे, कल्चरल सिस्टम, राइट, देन सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम, देन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी सिस्टम, देन लास्टली क्या था, ऑर्गेनिज्मिक, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, राइट। पर्सन कहता है कि इन सोसाइटी देयर इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इन different types of or different forms of systems of action or action systems or social system, right, कि there is communication and control, right, in different types of social systems or systems of action or action system, right। अब देखो कि कैसे होता है communication and control, right, communication and control कैसे होता है सोसाइटी में, right। फ्लो, मतलब इसको इसके सामने, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम के सामने लिखना, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी
और मोटिवेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन, सॉरी, मोटिवेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी, मोटिवेशन, समझ लेना इसको, एनर्जी और मोटिवेशन, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ओहो, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, एरो ऐसे, टॉप डाउन एरो दिस साइड, बॉटम अप एरो दिस साइड, राइट, यस, यस। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ, आर यू गेटिंग सम इन्फ्लुएंस फ्रॉम हियर? सी, अब समझ लो जरा इसको, इसको डिस्क्राइब कर लिया, और अच्छे फेयर तरीके से प्लीज डिस्क्राइब इट। कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, राइट, दीज टू आर रिलेटेड एंड दीज टू आर रिलेटेड, ठीक है ना? ऐसे भी यहाँ पे यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है? तो डिस्क्राइब इट, डिस्क्राइब कर लिया इसको। कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन, राइट, यस। नहीं, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, लेकिन दोनों रिलेटेड है। ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहाँ आता है? सॉरी, ये जो एनर्जी, जो नीड क्रिएट होता है, जैसे हंगर नीड, तो मैटर कहाँ पे आता? पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी, यू नो, एक्ट फॉर फूड, इजंट इट? यस। प्लीज इसको ड्रॉ कर लिया तो प्लीज राइट, पहले सेंटेंस लिख लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। अकॉर्डिंग टू पार्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बेटर से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, in the context of communication, in the context of social system, comma, change in social system, comma, communication and control, communication and control in social systems or systems of action, Talcott Parsons propounded the concept of cybernetic hierarchy of control. Parsons has propounded the concept of cybernetic hierarchy of control. Cybernetic hierarchy of control. Right. In this concept, Parsons explained the interlinkage between different systems of action, under bracket लिख लो, systems of action, full stop, under bracket, cybernetic refers to, under bracket लिखो, cybernetics refers to scientific study of communication and control. Scientific study of communication and control. Full stop. Here, under bracket ही लिखला आपके समझ के लिए, under bracket. Here, Talcott Parsons compared humans with machine
to explain system of communication, humans with machine to communicate system of communication to explain compared humans with machine to explain system of communication between different here Parson compared humans with machine to explain system of communication between different parts of social system, different parts of social system or systems of action, different parts of social system or systems of action. According to Parsons, social systems or systems of action, man, bracket close, yes, under bracket का मतलब यही होता है, under bracket closed. Then according to Parsons, different systems are interlinked with flow of energy and interlinked with flow of energy and flow and control of information. Flow and control of information. According to Parsons, different parts are interlinked with flow of energy and flow and control. वहाँ पे लिखोगे flow and control of information, right? Flow and control of information, right? Whenever, please, next paragraph. Whenever there is change in flow of energy or information, change in flow of energy or information, control system there is instability in society. There is instability in society. For the time being, equilibrium. For the time being, equilibrium. 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 Equilibrium of society is disrupted. For the time being, temporal, the equilibrium of society is disrupted. This means under bracket order and stability in society disrupted. Under bracket लिख लो. Equilibrium का मतलब क्या हुआ? Order and stability in society is disrupted, right? No society can continue long with disequilibrium, and so it is immediately restored. So it is immediately restored through the processes of immediately restored through the processes of first socialization and second social control. First process क्या? Socialization and second process social control. Please एक बार read करो इसको. Whatever you wrote, please read it. It's not that difficult. थोड़ा सा technical and Parsons has made it very complex. Process of socialization और second क्या बोलता है? Process of socialization and second social control, right? यहां तक क्लियर है?
सी अब यहाँ तक तो समझा दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो जैसे फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्सन कहता है कि चेंज इन सोसाइटी कैसे होता है। पार्सन के अकॉर्डिंग चेंज इन सोसाइटी whenever there is whenever there is flow of energy and yes information। जैसे जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल समझो इसको, फॉर एग्जाम्पल सेंट कैल्विन पर्सनालिटी, yes or no, personality, Saint Calvin propagated something different what was existing in society, yes or no, yes or no, Catholicism, Christian religious culture, Christian culture were based on Catholic propagations, yes na, in that society a personality propagated something different, right, yes or no, yes or no, and जो propagate किया वो क्या था, उसका internal motivation based on his understanding, his motivations, yes or no, Saint Calvin to इंडिया में ज्योतिबा फुले, राइट, राजा राममोहन रॉय, राइट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट, what they all, B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar, they propagated something different, yes or no, something different, they were motivated to challenge the existing order, existing culture, yes or no, last person, yes or no, they were motivated to challenge and they challenged the existing culture based on caste, based on religion or based on tradition, you can say, isn't it, getting a point, right, जो कलेक्टिव था उसमें इंडिविजुअल की बात नहीं है, कलेक्टिव, isn't it, कलेक्टिव कॉन्सेंस जो था, they challenged, getting a point, based on their meanings, their motivations, yes or no, yes, similarly, and whatever they propagated, was that easily welcomed in society, nahi, disequilibrium and disruption, disequilibrium and abolition of sati was followed by many protests, yes na, देव समाज, धर्म सभा, many protests, history में आप पढ़ेंगे, right, disequilibrium, tensions, conflict in society, right, getting a point, ये भी मानता है कि conflict होगा, लेकिन conflict क्यों होता है, not because of ownership and control of forces of production by haves and not by have nots, उसके बीच because conflict नहीं होता society में, tension नहीं होता society में, tension क्यों होता है, because of change in cybernetic hierarchy of कंट्रोल, ये जो कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम है इसमें चेंज, अगर फ्लो ऑफ एनर्जी, कोई अगर पर्सनालिटी खड़ा हुआ एंड ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यूज, नॉर्म्स, एग्जिस्टिंग कल्चर, एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस, इजंट इट, देन देयर वुड बी डिसइक्विलिब्रियम इन सोसाइटी। और केवल इसी से नहीं, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के हिसाब से ही समझो, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड all the information knowledge, यहाँ पे information का मतलब है knowledge related to society, culture, personalities based on हमारा जो traditional social institution था religion and caste, yes or no, religion, caste, patriarchy etc. Britishers introduced law abolition of sati, so don't you think that also caused, right, or many reforms which were introduced by the Britishers, for example, increasing, age of marriage age, isn't it? Yes, na? Consent Act, right? Then widow remarriage, उन्होंने क्या किया? एक नया cultural pattern establish किया, and that also for the time being caused disruption, disequilibrium, yes or no? Did people accept that?
आज भी चाइल्ड मैरिज का प्रैक्टिस कंटिन्यूज ऑन अ पर्टिकुलर डे इन इंडिया. कौन सा दिन होता है वो? राजस्थान, गुजरात, हाँ, या तीज पे, राइट, आखा तीज या समथिंग, सम ऑस्पिशियस डे फॉर मैरिज. In MP in year 2010, SDM hands were chopped off by the villagers. क्यों? क्योंकि she tried to, वो जो कलेक्टिव मैरिज हो रहा था ग्रुप में, लोगों का मैरिज, चाइल्ड मैरिज, उसमें प्रोटेस्ट में इतना मतलब कौन. सो दिस इज कल्चरल सिस्टम. कल्चरल सिस्टम में जब चेंज होता है, दैट ऑल्सो कॉजेज डिसरप्शंस. उससे भी डिसरप्शंस फॉर द टाइम बीइंग, डिसरप्शंस, डिसइक्विलिब्रियम एंड डिसरप्शंस, राइट. Getting your point. No society can bear disruption and disequilibrium for long. And society is stabilized. Society is stabilized over the period of time. कैसे? Through the process of socialization or social control. The values which were propagated by Dr. Ambedkar, Gandhi ji, and many others, right? Those values over the period of time became part of cultural system, social system, yes or no? Equality today, gender equality which we practice in the family, उसका भी क्रेडिट तो उन्हीं लोगों को जाता है ना जिन्होंने इक्वालिटी की बात की, yes or no? आज जो चाइल्ड राइट्स की बात आप करते हैं, हम करते हैं, अब तो हम नहीं रहे उस ग्रुप में, अब मेरे भी बच्चे हैं, वो भी चाइल्ड राइट की बात करते हैं, राइट. तो चाइल्ड राइट्स एंड इक्वालिटी रिस्पेक्टिव ऑफ एज, राइट, ये भी तो रूसो, वोल्टेयर एंड डॉक्टर अंबेडकर एंड अदर्स, उन्हीं को जाता है ना जिन्होंने इस इक्वालिटी के वैल्यू को रखा. तभी तो आज चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है, यस और नो, राइट. सो दिस इज लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम such information, such motivation, such energies which flow from individual, established, widely accepted, established as a part of social system and cultural system, right. देखो, likedness between individuals, emotional likedness होता है, emotional likedness, personalities are motivated to like each other, right. Beyond that, internal organismic system is there, sex drive is there, right. Personalities, motivations for liking each other, personality level पे. Then don't you think कि this likedness, individuals asserting their right, to marriage, right, over the period of time, accepted and being part of social system and cultural system, yes or no? आज individual preferential marriage is being part of social system or cultural system or not? Yes or no? Right? Some individual propagated for individual liberties and freedom, and over the period of time, those notions of liberty, ideas of liberty and freedom, not only political liberties and freedom, but also social, right? Social. राइट. एक पढ़ाऊंगा आपको मैं टॉपिक, जो इस बार का क्वेश्चन भी था, अभी जस्ट प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, सोशल डेमोक्रेसी, राइट. सो इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ मैरिज इज पार्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, यस और नो. जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस इज पार्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, इज इट? इंडिविजुअल राइट टू मेक चॉइस फॉर ऑक्यूपेशंस एज पर देयर टैलेंट एंड मेरिट इज पार्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी केवल पॉलिटिकल नहीं होता, social democracy, isn't it? Economic democracy, cultural democracy, isn't it? और वही हम अपन को सोशियोलॉजी में पढ़ना है, डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, these ideas propagated by individuals, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, became part of cultural system, yes or no? And thus change in society. बस अब आई होप यू अंडरस्टूड. अगर समझ गए तो ठीक, नहीं भी समझे तो मान लेंगे, राइट. एंड whatever established in cultural system, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टेब्लिश हुआ है, जो भी वैल्यूज, नॉर्म्स, आइडियाज, डोंट यू थिंक कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी भी वो फ्लो, वो इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंचा है पर्सनालिटीज पे. मेनी पर्सनालिटीज आर इग्नोरेंट. crores of women domesticated in the households are not aware of their entitlements, equal entitlements over property, equal entitlement over health system, yes or no? Equal entitlement in matters of reproduction, right, are not aware, but still
over the period of time, don't you think, through the process of socialization, learning, education, awareness campaigns by the government, Beti Bachao, Beti Padhao, literacy campaigns and all, over the period of time, whatever is enshrined in our constitution is becoming part of social system and personality system? Yes or no? Over the period of time flow हो रहा है कि नहीं? Yes na? Over the period of time that is flowing down. Yes na? And constitution is controlling our behavior. Constitution is controlling the personality. Domestic Violence Act आया ना? Over the period of time, protection to women, isn't it? Yes or no? Many protective acts are there at place, isn't it? For different sections, particularly excluded sections, subaltern sections of society, isn't it? So this is, whenever there is change in flow of energy and information, disequilibrium for the time being, but that is stabilized with the process of socialization and social controls, and thus change occurs in society. Got this point? Yes ना? सिंपल है, थोड़ा मैकेनिकल टाइप है, मशीन टाइप, लेकिन हम भी मशीन वर्ल्ड के हैं, समझ जाएंगे, और नहीं समझ में आएगा तो मगअप कर लेंगे, चॉइस तो है ही, राइट? ये आपको पता है, मुझे पता है कि मगअप किया है. Yes, got this point. Next, lastly, according to Parsons, through the process of socialization, shared values of society, shared values and norms, comma, institutional knowledge of society is transmitted from one generation to another generation, by various institutions like family, education, etc. Other generation by family, education, etc. And thus stability with change is maintained in society. Stability with change, and thus stability with change is maintained in society. Thus stability with change is maintained in society. Family, education, etc. Institutions like family, education, etc. And thus stability with change is maintained in society. Not only socialization, next sentence, not only socializations, but various institutions like, not only socialization like, but, not only socialization, but various institutions like law, judiciary, police system, bureaucracy, also encourage conformity to the shared values and discourage deviance in society. Encourage conformity to shared values, under bracket cultural values, social values, है ना? Encourage conformity to shared values, under bracket cultural values, social values, etc. bracket close, and prevents deviance, comma, maintaining order and stability in society. Prevent deviance, comma, maintaining order and stability in society. Maintains order and stability in society. Right? Yes. Lastly, critical assessment, critical evaluation. फर्स्ट क्रिटिसिज्म किसने करेगा, कौन करेगा? नहीं, उसके पहले उसका डिसिपल R.K. मर्टन, जो कि डिसिपल थे किसके?
पार्सन्स का आर.के. मर्टन वाज डिसिपल ऑफ टालकट पार्सन्स, मतलब ही वाज ट्रेंड बाय टालकट पार्सन इन सोशियोलॉजी, है ना? यस, फर्स्ट आर.के. मर्टन R.K. Merton criticized R.K. Merton criticized Talcott Parsons for his grand general theoretical orientation, for his grand general theoretical orientations, right? Grand general theoretical orientations, full stop. Merton argued that Merton argued that Parsons' theory, Merton argued that Parsons' theory of social system is biased, functionally biased and ignores dysfunctions of the system, ignores dysfunctions of the system, functionally biased, that ignores dysfunctions of the system or different institution of society, right? In place of grand general theory, in place of grand general theoretical model, sociologists should propound theories of middle range, है ना? theories of middle range, बस इतना लिख दोगे वो समझ जाएगा. मिडिल रेंज का यहाँ एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, और पहले मैं बता चुका हूँ, रिवाइज करेंगे तो आपको भी याद रहेगा. theories of middle range, according to theories of middle range, theory should emanate out of facts to prove the fact, to explain the fact, and when we are factually oriented तो we find कि social system is functional as well as dysfunctional. जैसा इन्होंने कहा था कि social system functional है as well as dysfunctional है, right? अब जैसे education as a social system, है ना? तो education and change में अपन डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव. कई मार्क्सिस्ट कहते हैं कि एजुकेशन जो है ये लिमिट्स टू द पर्सनालिटी, राइट, पुट लिमिट्स ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट. बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया है एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, तो वो सब पॉइंट भी इधर क्रिटिसिज्म में यूज कर लोगे. एक दो एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, राइट, लेकिन अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा एजुकेशन एंड सोशल चेंज में, ठीक है? हाँ, मिडिल रेंज में दोनों आ जाएगा कि नॉट ओनली फंक्शन बट ऑल्सो डिसफंक्शन. इवन फंक्शन कैन बी एनालाइज वेरिएबली बाई मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू R.K. मर्टन. ठीक है, नेक्स्ट लाइन. अकॉर्डिंग टू रैफ डैरेंडॉर्फ, आई होप आपको याद है रैफ डैरेंडॉर्फ. अकॉर्डिंग टू रैफ डैरेंडॉर्फ, टालकट Parsons' conceptual theoretical model is too abstract. Conceptual theoretical model is too abstract. Is too, too abstract. Full stop. It has narrow empirical testability and little practical utility. It has narrow empirical testability and little practical utility. According to Dahrendorf, इसी में कंटिन्यू कर लो, no need not to write other point. According to Dahrendorf, Talcott Parsons
not only overemphasized on functionalities, comma, his theoretical model is functionalities, जो पहले वाले पॉइंट में हमने क्रिटिसाइज किया, his theoretical model is largely represents American social system, American social system, not society at large, not the society at large, not the society at large. Yes ना? Yes, है ना? इसीलिए कहता है कि लिटिल क्या, एम्पिरिकल टेस्टेबिलिटी एंड लो प्रैक्टिकल यूटिलिटी, है ना? नेक्स्ट इज इन टालकट पार्सन्स थियोरेटिकल स्कीम, इन टालकट, और हाँ नेक्स्ट लिखो, बेटर से टालकट पार्सन्स इन हिज थियोरेटिकल स्कीम, टालकट पार्सन्स in his theoretical schemes presented an over socialized view of members, over socialized view of members or actors in society, members or actors in society who is well conscious of his or her need disposition, his or her need dispositions, as well as values and norms, as well as values and norms. Yes or no? Yes ना? वो जब कहता है कि individual action is influenced by range of motivational orientation and value orientation, range of motivational orientation and value, ऐसा होता है क्या कि you are always aware of your motivations and values? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, not always, isn't it? So theoretically सुनने में तो अच्छा लगता है ये कि ऐसा, लेकिन practically, it is difficult to observe for a researcher. It is difficult to observe for a researcher. क्या रिसर्चर ऑब्जर्व कर सकता है इस लेवल पे? नहीं, वो पार्सन ने अपना लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिस्क्राइब कर दिया. इतना नहीं डिटेल करोगे, इतना लिखोगे वो समझ जाएगा, है ना? इतना काफी है कि ही प्रेजेंटेड ओवर सोशलाइज्ड व्यू ऑफ द एक्टर. ठीक है ना? नेक्स्ट लाइन इसी से रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स, according to Marxist critics, next point. According to Marxist critics, Talcott Parsons ignored the influence of, ignored or neglected the influence of or impact of class structure on the actions of individuals. Right, है ना? He neglected class consciousness and class antagonism, that exist in society, and influence human social relations. Right, human social relations. He has portrayed human society as perfect society with harmony
perfect society with harmony, comma, devoid of conflict. राइट वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट टेंशन होगा तो टेम्पोरल होगा. अकॉर्डिंग टू एक लाइन और लास्टली, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट ह्यूमन सोसाइटी, according to Marxist, human society is characterized by a structured, human society is characterized by a structured inequalities. Human society is characterized by a structured inequalities. Right? Okay, got this point? Yes. एक और, according to C.W. Mills, according to C.W. Mills, no theoretical perspective can be scientific without analyzing role of power elite, inverted comma लिख लेना, power elite in the society. According to many other neo-Marxist, C.W. Mills क्या था? Neo-Marxist था. Yes or no? According to many other neo-Marxist, apart from C.W. Mills too, Parsons ignored role of power and authority exercised by few individuals that shape the social structure and system. Few individuals that shape the social structure and system. But social structure and system, particularly American social system, आगे पावर एलिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में. American social system largely influenced by the dominance of power elite, largely influenced by the dominance of power elites. Right? Yes, na? Yes. Parsons' notion of organismic system. Yes, next point. Parsons' notions of organismic system has also been criticized. According to critic, sociologists should be more concerned and oriented towards observational facts than biological realities. Observational facts than biological realities. Right? Parsons is also criticized for being armchair theorist. इसी में armchair theorist who borrowed the conceptual strands from
The conceptual strands from his predecessors and borrowed conceptual strands from his predecessors, concept from predecessors, and combined as per his sociological, theoretical, theoretical needs, as per his sociological, theoretical needs. Right? Yes. Got this point? Yes. Raj was my student at sometimes, right? Raj. Okay, good luck. God bless you. Tomorrow, brief discussion on Parsons, and then we will discuss thinkers of paper 2. Thinkers of paper 2. पहले, फिर revert back to paper 1. Right? Good luck.